Yes. Let us start with the MCQs from alternating currents. We have seen the theory in last lecture. Yes, so see these MCQs. The first MCQ. A rectangular coil of 300 turns has an average area of 25 centimeter by 10 centimeter. The coil rotates with a speed of 50 cycles per second in a uniform magnetic field of 4 into 10 raised to minus 2 Tesla about an axis perpendicular to the field. Then what is the peak value of induced EMF? Yes. So we have to find out the peak value of induced EMF. अब देखो ये जैसा कि हमको पता है कि whenever a coil rotates, then the flux passing through it is given by the formula NBA into cos omega t. Correct है? And we just differentiate this and use the Faraday's law. So d phi by dt हम यूज करते हैं यहाँ पे. तो इसको अगर हम phi को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक्चुअली बनता है NBA इंटू कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन ओमेगा टी. ओके, और इसको हमको ओमेगा टी के डेरिवेटिव से मतलब ओमेगा से मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाता है. तो इस क्योंकि डेरिवेटिव का चेन रूल्स जो है वो उससे उसको यूज करके हमको ये मिलता है. और इसको हम यूज कर सकते लिख सकते हैं एन बी ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी एक्चुअली. And this is actually the value of instantaneous EMF, in which this whole thing is actually replaced by this E naught, and we can just write it as E naught sine omega t here. So that means E naught jo hai, E naught is going to be the peak value of current, which is actually equal to the number of turns of the coil into magnetic induction into area into angular velocity. But since the frequency is given here 50 cycles per second, मतलब ये frequency हो गया, तो इसलिए हमको उसको frequency के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो we can use it omega is equal to 2 pi f here. जैसे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इससे ये बन जाता है E naught is equal to 2 pi f into NBA as it is. So this will actually be the final formula for peak EMF, peak value of EMF. You can just remember this formula also directly, so that we can just as it is and get the answer. So here it will be 2 into pi. Just keep this pi as it is because all the options contain pi. Yes, and hence we can just get this 2 into pi into frequency, which is given to be 50 cycles per second. Yes, that is called as hertz actually. Hertz stand for cycles per second, no doubt. Then here it is number of turns in the coil is given to be 300 here, multiplied with the magnetic induction, which is already 4 into 10 raised to minus 2 here, and that is multiplied by the area of the coil, which is 25 into 10, which actually becomes 250, but that is going to be in centimeter square. So we'll have to convert it into meter square by multiplying it by 10 raised to minus 4 here. So that finally we can just have this multiplied 50 into 2 actually becomes 100. Okay, so that 100 and this 10 raised to minus 2 will actually get cancelled. नहीं तो ऐसा करेंगे, ये जो है 2 into 50 100 बनता है, वो 100 और ये दो zeros मिलके 10 raised to 4 बनेगा, और ये 10 raised to 4 इस 10 raised to minus 4 के साथ उड़ जाएगा. ठीक है, और बाकी बचेगा क्या, इवन यहाँ पे देखो 4 into 250 actually comes out to be 1000, and this 1000 multiplied by 10 raised to minus 2 actually comes out to be 100, right? So 1000 into 10 raised to minus 2 becomes 10 only, and hence we can just get it as 10 pi, and this 3 is also missing, right? So therefore it will be actually 30 pi, right? So 30 pi, which is going to be there in this option 2 here, which is correct in this case. Okay, so this is the first question. Let us see the next question. A voltage source V is equal to V naught sine omega t is connected across a series LCR circuit. Okay, तो ये जो है voltage source का equation दिया हुआ है. The value of L and C in the circuit are equal to 5R by root 3 omega and root 3 upon
4 r omega respectively. Then power factor and the quality factor of the circuit are equal respectively to. Okay, that means we want to find out the quality factor and power factor here. Yes. So what are the given things here? See, L is actually given to be ये जो है 5r upon √3 omega, ये दिया हुआ है L का value. At the same time, C, that means capacitance here, is actually given to be √3 upon 4r omega. Okay, this is the value of C given here. But what is the formula for power factor? Do you know? Power factor is actually going to be R by Z, correct? R by Z, but we require Z for that, right? So in order to find out this Z here, we'll use the formula for Z, that is root of R square plus XL square minus XC square, correct? Yes. But then we'll have to work it out. So root of R square is just kept as it is. But what is this XL here? अच्छा, XL भी हमको निकालना होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, yes, we can just shift this omega in that side and simply get XL here, because we know that XL is actually going to be omega into L. ये फॉर्मूला है हमारे पास, और यहाँ पे अगर हमने L का वैल्यू डाल दिया जो कि ये पूरा है, तो उसमें ओमेगा में आंसर देखो यहाँ पे 5r upon √3 omega. This will be the value of L here, put here. Okay, तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? So simply we can just say it will be 5r upon √3. That's it. Okay, we can just shift this slightly below here, so that we can first of all find out XL as well as XC, and then we can just go to finding this Z here. Yes. Okay, so XL is found out to be equal to 5r upon √3. Okay, what about XC? See here, XC is going to be 1 upon omega C. Yes, so 1 upon omega C. C मतलब फिर से यहाँ पे देखो √3 upon 4r omega है, तो ये बन गया हमारा √3 upon 4r omega. So that this omega once again gets cancelled here, and we'll be left with XC to be simply ये 4r ऊपर चला जाएगा और हमको मिलेगा simply 4r by √3. That's it. So this is going to be the value of XC, which can be put here. तो XL भी मिल गया, XC भी मिल गया. So we can just get this XL minus XC the whole square. XL is going to be 5r by √3 minus XC is here 4r by √3. Okay, and उसका square हमको करना है. Yes. So let us solve this further. We can just get it as r square kept as it is, plus here it is 4r by √3 minus, sorry, 5r by √3 minus 4r by √3 actually comes out to be simply r by √3, correct? Because 5r minus 4r comes out to be simple r, and √3 is 10 common once in the denominator, so that we can just get this as in the next step. Yes, so it will be r by √3 का स्क्वायर क्या बनता है देखो, so it will actually be r square by 3, correct? So you can write this as root of r square plus r square by 3. Okay, and then we can just simplify this further and get this as 3r square plus r square upon 3, matlab which will be 4r square upon 3. That's it. So we have got this z here. Z कितना मिल रहा है हमको? ये अगर इसको अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट बनता है 2 √3 as it is, and r स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिंपली r. तो ये हमको मिल गया. इससे हमको पावर फैक्टर मिलेगा. What is the formula for power factor? Remember that power factor is denoted by cos theta, and this cos theta happens to be actually r upon z, right? But if we just put the value of z here in this formula, then r divided by z, which is 2 by √3 r. So यहाँ पे अगर 2 by √3 r डाल देंगे,
तो देखो क्या मिलेगा हमको, दिस इज 2/√3 into r. So that r just gets cancelled and this 1/2/√3 becomes √3/2 actually. So here it is going to be √3/2, and since power factor is going to be √3/2, yes, no doubt we can just find out theta also from this, but it is not asked actually. So theta can be written to be 30 degree because cos 30 is √3/2. बट चलो ठीक है, पावर फैक्टर तो हमको इधर से ही मिल गया है, जिसके बेसिस पे हम ऑलरेडी ये दो ऑप्शंस रूल आउट कर सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड, एंड वन फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन we can just keep it here because power factor is going to be √3/2 which is present in the option first and fourth here. Okay, चलो, but फिर भी हमको ये करना पड़ेगा, क्वालिटी फैक्टर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ पावर फैक्टर हमको मिला हुआ है और वो दो ऑप्शंस में ऑलरेडी है. तो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकलता है? तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है 1/r into √L/c, correct है? So this is the formula for quality factor. So if we just put the values here, then root of L/c, L is nothing but this 5r/√3 omega, correct hai? Yes, so it will be 5r upon √3 omega, and that is to be divided by c, where c is actually going to be √3 upon 4r omega. Yes, so this is here √3 upon 4r omega. Okay, so if we just simplify this further, then we can get this 1/r into root of, इसका रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से, तो ये मिल जाएगा 5r upon √3 ओमेगा इंटू इसका उल्टा करके मिलेगा 4r ओमेगा upon √3, so that here omega gets cancelled. Yes, omega gets cancelled and we'll be left with simply q is equal to 1/r into what is this here, root of, अब देखो 5 into 4 becomes 20 and √3 into √3 becomes actually 3, so here it becomes 20/3, and that is r into r becomes r square here in this case, right? R square. And if you just simplify this still further, then we can be able to get this root of 20/3 as it is, and 1/r here, and this r square will be taken out of the square root sign, leaving behind r simply. So that r will just get cancelled with this r here, so that we can just be left with root of 20/3 as a final answer, which is already there in this option 4 here, which must be the correct one. Hurry, 20/3, this is the correct option actually. यहाँ पे ये incorrect नहीं, वो incorrect दिया, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उन्होंने करेक्ट दिया है, but that is not true actually. This option is correct actually. ठीक है, ये करेक्शन करो. Yes, okay, see the next question. Again the similar question here. This v is equal to v naught sin omega t is connected across a series LCR circuit. The value of L and C in the circuit are equal to 9r/omega and 1/10r omega respectively. The phase angle between current and voltage and quality factor of the circuit. Again the same thing. See here, L is given to be 9r/omega, correct है, जिससे हमको मिलता है ओमेगा L is equal to 9r, जिससे मिलता है कि XL itself is actually going to be 9r, करेक्ट है. XL हमको मिल गया क्योंकि ये ओमेगा L का मतलब ही XL होता है. ओके, at the same time C is actually given to be 1/10r ओमेगा, करेक्ट है, जिसको यूज करके हम लिख सकते हैं कि ये ओमेगा अगर उस तरफ चला जाए तो हमको मिलेगा ओमेगा C is actually going to be 1/10r, राइट, जिससे हमको मिलेगा, बट इसको अगर हम उल्टा करेंगे दोनों तरफ तो हमको मिलेगा 1/omega c is actually going to be 10r, राइट, एंड 1/omega c मतलब ही क्या होता है, xc होता है, तो इसलिए इससे हमको मिलेगा xc is actually going to be 10r. Okay, and now if we just try to find out the z, that is impedance here,
तो इम्पीडेंस अगर निकालने के लिए ट्राई करेंगे, इम्पीडेंस भी एक्चुअली जरूरी नहीं है। देखो क्योंकि tan फाइ जो होता है ना, tan फाइ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? tan फाइ इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, करेक्ट है? सो इफ यू जस्ट यूज इट हियर, देन एक्सएल which is 9r minus xc which is 10r, that is to be divided by r itself, which happens to be actually minus r upon r. That means it is going to be minus 1 here, correct है? minus 1. So that means अब अगर tan phi is equal to minus 1 है, so this is possible only when phi is going to be equal to minus 45, correct है? So there is minus 45 degree. This is the phase angle between voltage and current, which can also be written as minus of pi by 4 radian here. ओके, रेडियन में अगर हमको उसको कन्वर्ट करना है तो वो पाई बाय 4 बन जाएगा। और क्वालिटी फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि Q जो है वो 1/r इंटू रूट ऑफ L बाय सी हुआ करता है, जिसमें L तो ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, दिया हुआ है मतलब, जो कि 9r बाय ओमेगा है। तो जस्ट पुट दिस 9r बाय ओमेगा हियर एंड C से उसको डिवाइड करना है, तो मतलब C के रेसिप्रोकल से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी C खुद 1/10r ओमेगा है, तो उसका रेसिप्रोकल सिंपली 10r ओमेगा बन जाएगा। तो इसमें से चलो ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 9 इंटू 10 बिकम्स 90 एंड आर स्क्वायर। सो 1/r इंटू 90 रूट 90 इंटू आर स्क्वायर, बट आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट फिर r बनता है, तो इसलिए आर आर कैंसिल होके बचेगा Q इज इक्वल टू रूट 90, ओके, रूट 90 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट 3 रूट 10 हियर, ओके, 3 रूट 10 लिख सकते हैं उसको। सो दिस बिकम्स द क्वालिटी फैक्टर एंड दिस बिकम्स द फेज एंगल, दैट्स ऑल। So phase angle between EMF and current is going to be minus 45. So what does it mean? We can just show the phasor diagram where current I is taken as a reference in case of a series LCR circuit. Don't forget that. Series LCR circuit में current को हम लेते हैं as a reference. तो इसको I नॉट से डिनोट कर देंगे यहाँ पे, और जबकि EMF minus 45 डिग्री से यहाँ पे एंगल पे है, तो minus 45 मतलब इस तरफ आएगा वो, नीचे की तरफ, राइट? सो दिस विल बी द एंगल, फेज एंगल ऑफ EMF हियर। तो ये EMF का फेज एंगल बन गया, जिसको हम E नॉट बोल सकते हैं आराम से, एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ minus 45 डिग्री विद द करंट। व्हाट डज इट मीन? अगर इन दोनों के बीच में एंगल 45 है, तो इसका मतलब EMF क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? So you can just say that current is leading here and EMF is lagging, okay? तो EMF लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है इस केस में, तो वही ऑप्शन हमको करेक्ट ऑप्शन से चूज करना है, बस खत्म। सो पाई बाय 4 तो करेक्ट है, बट करंट इज लीडिंग, सो करंट लैगिंग वाले सारे ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। minus 45 मतलब EMF must be lagging, current must be leading. Make it correct. There should be current leading, okay? नहीं तो ये दोनों ऑप्शंस तो सेम ही हो जाएंगे ना फिर। देखो ठीक से, दोनों ऑप्शंस के अंदर सेम ही दिया हुआ है, करंट लैगिंग 3 रूट 10 3 रूट 10, पाई बाय 4 पाई बाय 4, ठीक है? तो एक ऑप्शन में लीडिंग होगा और एक ऑप्शन में लैगिंग हुआ, जिसमें से लैगिंग वाला ऑप्शन, सॉरी, करंट इज लीडिंग वाला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है एज अ करेक्ट ऑप्शन, व्हिच मस्ट बी दिस वन हियर। ओनली द डिफरेंस इज दैट हियर इट शुड बी लीडिंग, ओके? चलो ठीक है, सो नेक्स्ट वन, yes, for the LCR series circuit as shown in here, the peak value of voltage, the phase difference between applied voltage and the current flowing and the power factor of the circuit are respectively, okay? तो देखो सारे जो वैल्यूज है वो डायग्राम में दिए हुए, आपको दिख रहा है डायग्राम प्रॉपर, या थोड़ा बड़ा दिखाऊं?
अभी शायद दिख रहा है ठीक से। अच्छा ठीक है, so let us see what are the given things here. The first thing is that this inductance is given here to be 10 millihenry. Okay, 10 millihenry. Just note it down. L is going to be 10 millihenry. Capacitance is already given to be 1 picofarad. So again, don't convert them. Don't forget to convert them into standard units. So it will be 10 into 10 raised to minus 3 Henry. And what about the capacitance here? It is 1 picofarad. And pico मतलब कितना? 10 raised to minus 12 होता है, तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं 10 raised to minus 12 farad. Okay, इसको लिख सकते हैं 10 raised to minus 2 Henry. Okay, and similarly resistance is also given to be simply 10 ohm, right? So this is the resistance. And equation of the current is also given actually 1 by root 2 ampere. अब देखो जो भी करंट दिया जाता है तो वो हमेशा RMS करंट होता है, unless and until it is mentioned it is going to be RMS current here. So IRMS is actually given to be 1 by root 2 ampere. Okay, करंट मिल गया। और क्या दिया हुआ है? पावर फैक्टर तो हमको निकालना है। Yes, see here we can just find out XL and XC easily. XL happens to be actually omega into L, but is frequency given here? Yes, इसमें से हमको frequency मिलने वाला है, देखो ठीक से यहाँ पे। Since the equation of voltage is given to be V is equal to V naught sin ब्रैकेट में 10 raised to 4t, करेक्ट है? तो ये 10 raised to 4 into t दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम अगर कंपेयर करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वोल्टेज का, v is equal to v naught sin ओमेगा t, तो इससे हमको मिलता है ओमेगा is going to be equal to 10 raised to 4, करेक्ट है? So if we get this omega 10 raised to 4, then we can just easily find out the XL as well as XC here. Okay, XL is going to be omega into L, correct है? Omega into L, and omega is 10 raised to 4, L is 10 raised to minus 2 here. So if we just multiply them together, then we can get this 10 raised to 2 ohm as this omega here. Sorry, XL here. XC is going to be 1 upon omega C actually. So, but omega is 10 raised to 4 and C is 10 raised to minus 12. Okay, so this is 10 raised to minus 12 here. And if we just multiply this, here we can get this 10 raised to minus 8 actually. But when it goes up, it actually becomes 10 raised to plus 8. So this is 10 raised to 8 ohm, that is here XC. Yes. So what we want is power factor. And phase difference. Okay. तो phase difference between voltage and current. तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पावर फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, नो डाउट। पावर फैक्टर अगर निकालेंगे तो वो फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा आराम से। देखो पावर फैक्टर cos थीटा is, or cos phi we can say, is called as power factor, which is going to be actually R by Z. but यहाँ पे Z हमको नहीं पता है, so let us try to find out Z first. Z के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रूट ऑफ 10 स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, करेक्ट? दिस इज Z. So if we just try to find out, 10 का स्क्वायर बन गया 100, okay, plus XL which is going to be 100 again, right? हाँ, तो ये 100 minus XC is already 10 raised to 8, which is very large actually. So 10 raised to 8 minus 100.
ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा एक्चुअली, 10⁸ ही रहेगा वो। और 10⁸ का स्क्वायर अगर करेंगे और स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁸ ओनली, नहीं सॉरी 10⁻16 इट विल बी एक्चुअली, क्योंकि ये 100 उसके सामने निग्लिजिबल है, ये 100 भी निग्लिजिबल है, बाकी डोमिनेंट कौन है, 10⁸ ही है। तो 10⁸ का स्क्वायर बनता है 10⁻16, और उसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 10⁸ सिंपली। सो वी कैन जस्ट कंसिडर दिस z to be simply 10⁸ only. This is 10⁸ ohm. This is the value of z here. Once we get z, we can get power factor cos phi to be simply equal to r by z, where r is going to be 10 and z is going to be 10⁸, which makes it 10⁻⁻7, which is very, very small, almost zero. So phi will be pi by 2 only. Cos phi will be 10⁻⁻7, and the phase difference something is wrong actually. पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स z अगर मिल गया जो कि 10⁸ है, तो उसको अगर नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, you can just skip it. Let us see the next question. This is again of same type. See here, voltage source connected, L and C are equal to this. So L is given already to be 2√3 into r upon omega, and C is given to be 1 upon √3 r omega. So from this we get that omega L is equal to 2√3 r, 2√3 r only, which means that XL, ये XL ही बन गया, जिसको हम 2√3 r लिख सकते हैं, और यहाँ से हमको मिलता है ओमेगा C एक्चुअली। तो ओमेगा C becomes 1 upon √3 r, but then 1 upon x omega C becomes √3 r, and that is called as XC. So therefore XC happens to be actually √3 into r simply. From this we can just get the phase difference. तो phase difference and power factor. Power factor मिलने के लिए cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, cos phi is equal to r by z, but z is required for that. So let us try to find out z. Here z is going to be root of r square plus xl minus xc का whole square, correct है? So r, which is r only, and xl minus xc, how much is this? So देखो xl का वैल्यू है 2√3 minus simply √3. r can be taken common, so r square will be there and square यहाँ पे भी आएगा। तो z का वैल्यू एक्चुअली कितना मिल रहा है देखो, तो यहाँ पे बैठ गया r स्क्वायर, और यहाँ पे √3 2√3 माइनस ओनली √3 एक्चुअली कम्स आउट टू बी सिंपली √3, और √3 का स्क्वायर बन गया 3, तो इसलिए वहाँ पे 3r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और 3r square plus r square becomes actually 4r square. So root of 4r square is actually going to be 2r here. So therefore, if you just try to find out cos phi, then cos phi becomes equal to r by z, where r is as it is and z is going to be 2r here. So that r gets cancelled and we'll be left with 1 by 2 here. That is the value of power factor. Okay, so power factor to mil gaya 1 by 2. और difference between this current and EMF will be, अगर cos phi equal to 1 by 2 है, तो phi obviously will be equal to 60 degree. That means it is pi by 3 radian. That's all. So this is the value of, and this is the correct answer. Second one will be the correct answer. Okay. Let us check next one. Yes. Okay. The resonance frequency for each of the following two individual LCR series circuits, A and B, shown here, has the same value, say omega naught. Okay, तो resonance frequency दोनों का same है. For series LCR circuit,
obtained by having series combination shown. ओके, तो मतलब ये वाला जो सर्किट है इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा in terms of omega naught. You have to find out. तो अभी देखो, what is the difference between this circuit and this circuit here? See, in this first circuit, इस सर्किट का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है. इस वाले सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा नॉट है. इस वाले सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. लेट अस कॉल इट एज ओमेगा डैश. अब ये तुमको पता है कि जो रेजोनेंट सर्किट होता है तो उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना हुआ करता है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/√LC. ये ओमेगा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है हमको. दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC and this formula is to be used 3 times. So see here from the first circuit here, ये जो first circuit है उसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं. देखो, from the first circuit we can just call that omega naught is actually going to be 1/√L1 C1. Do you agree with this? This is L1, this is C1. R doesn't appear in the formula for frequency, resonant frequency. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में किधर भी रेजिस्टेंस आता ही नहीं है. तो रेजिस्टेंस कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंडक्टर्स और कैपेसिटेंस इन दोनों के वैल्यूज के ऊपर ही वो डिपेंड करता है. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड सर्किट ओमेगा नॉट, बट व्हाट इट शुड बी इक्वल टू L2C2. तो इसलिए यहाँ पे सेकंड जो सर्किट हमारे पास है, ये देखो ये वाला सेकंड सर्किट है. ठीक है, तो उसको यूज करके हमको मिलेगा कि ओमेगा नॉट मस्ट बी एक्चुअली इक्वल टू 1/√L2C2. ओके, यस. एंड देन थर्ड जो है, ये वाला थर्ड जो सर्किट हमारे पास है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा. तो ओमेगा डैश we can just call it as, which will be actually equal to 1/√of इंडक्टेंस इन दैट सर्किट. अभी देखो ये दोनों इंडक्टेंस जो है वो अगर सीरीज में लगते हैं तो उनका इफेक्टिव इंडक्टेंस जो भी बनेगा तो उसको हम बोल देंगे LS. ओके, LS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस. और उसी सर्किट में देखो कैपेसिटेंस कितना है, ये दोनों कैपेसिटेंस यहाँ पे लगे हुए हैं सीरीज में, तो इसलिए इन दोनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसको हम बोल देंगे CS. चलेगा ना, CS दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस. तो इट विल बी CS हियर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. बट एज वी नो दैट in case of series combination, when the two inductances connected in series with each other, the effective inductance happens to be the sum of the two. Therefore we can just get that this LS is actually going to be L1 plus L2, no doubt. But कैपेसिटेंस के बारे में ऐसा नहीं होता. कैपेसिटेंस के बारे में क्या होता है, देखो ठीक से. In the case of capacitance, when the two capacitors are connected in series, their effective capacitance in series combination happens to be actually the reciprocal of the sum of reciprocals of both of these capacitors individually. That means we can just have the formula CS is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. करेक्ट है. ये एक्चुअली इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको मिलता है जो कि 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस फॉर्मूला से ही डिराइव किया जा सकता है. सो अभी ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमको रखने हैं इस इक्वेशन के अंदर. ओके, if you just put both of these values here in this equation, then we can be able to get something here, that is omega dash, which is actually going to be equal to 1/√of, yes, LS will actually be equal to L1 plus L2. Okay, and here it is CS is going to be actually equal to C1 C2 upon C1 plus C2. Okay, yes, so this will be the value of omega dash. But now we have to simplify this further and express it in terms of omega naught. How will you do that? Okay, see, we can just take this C1 plus C2 in the numerator here, so that we can just get this omega dash is equal to root of
here it is going to be C1 plus C2 in the numerator, and in the denominator it will be ब्रैकेट में आएगा L1 plus L2 और बाहर में C1 C2 as it is. करेक्ट है? Yes. So still we can just simplify this further and get this as, तो देखो न्यूमरेटर में जो है C1 plus C2 वैसे ही रखना होगा हमको, C1 plus C2 kept as it is. Here if you just open the bracket, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसको अगर हम ओपन करेंगे ना तो हमको मिलेगा L1 into C1 C2, okay, plus here it is there is L2 into C1 C2, which can also be written as C1 into L2 C2, okay, no doubt it is just a rearrangement. तीन टर्म्स मल्टीप्लाई करने हैं, उसको हम शफल कर सकते हैं आराम से, नो डाउट. Yes, so omega dash is actually going to be equal to root of this C1 plus C2 is just kept as it is in the numerator. What about the denominator if is as C? L1 C1 and L2 C2. See here, this L1 C1 is already there in the given things. Can you see? ये जो दिया हुआ चीज है तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, देखो L1 C1 का वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या मिलेगा L1 C1 का वैल्यू? चेक करो एक बार. See here, we can just find out the value of yes, from the first condition here, we can just get squaring both sides. What we get is, we can just get L1 C1 is equal to 1 upon omega naught square, okay? And from this equation here, you can just get that L2 C2 will actually be equal to 1 upon omega naught square again, correct है? So L1 C1 और L2 C2 के वैल्यूज है, तो वो अगर यहाँ पे रख देंगे तो देखो यहाँ पे L1 C1 के बदले अगर हम उसका वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और that is multiplied by C2 kept as it is, right? Yes, plus here again we can just put the value of L2 C2 here and C1 is just kept as it is. So यहाँ पे आ जाएगा C1 into L2 C2 which is going to be 1 upon omega naught square, okay? This is the value of L2 C2 and this is going to be the value of L1 C1, okay? So if you just try to simplify this till further, then in the numerator C1 plus C2 is just kept as it is, and from the denominator we can just take 1 upon omega naught square common, okay, so that we will be left with simply C2 plus C1 inside the bracket, which will actually get cancelled with this C2 plus C1 or C1 plus C2 here. ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 upon omega naught square जो है वो ऊपर जाके क्या बनेगा, omega naught square बनेगा. So omega dash can actually be written to be simply equal to root of omega naught square, and this shows that this omega naught square का square root क्या बनेगा, simply omega naught बन जाएगा, and this is going to be the answer which is already there in option number 1 here, okay, which must be correct here. Yes, let's see the next one. Okay, so RMS value of this sawtooth alternating voltage shown here equal to, okay, so sawtooth voltage है ये. sawtooth मतलब ये just it's a name for this type of voltage. तो ये जो वोल्टेज है वो स्टार्टिंग में बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जा रहा है इस तरह से, फिर अचानक जैसे वो यहाँ पे निगेटिव बन जाता है और निगेटिव से बढ़ता जाता है और इस तरफ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो अभी जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वोल्टेज. वी नो दैट आरएमएस वोल्टेज इज गिवन बाय ERMS, which is actually defined to be simply the integration of from 0 to time interval t here
ओके, आई स्क्वायर सॉरी ई नॉट ई स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस ई आर एम एस। ओके, और इसका भी हमको स्क्वायर रूट भी लेना होगा, और उससे पहले इसको टी से डिवाइड भी करना होगा। टी मतलब टाइम पीरियड। ओके, सो दिस इज ये तो ठीक है, इसको हम ऐसा करेंगे, इस तरफ स्क्वायर डाल देंगे ताकि लास्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आराम से। यस, दिस इज द फॉर्मूला। लेट अस यूज इट हियर। बट अब यहाँ पे क्या है ना कि ये इंटीग्रेशन जो है वो हमको दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। फर्स्ट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर, ओके, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगेन। तो इस तरह से दो पार्ट्स में हमको कैरी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस वन। यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये सडनली यहाँ पे नीचे जंप कर रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन भी दो अलग अलग पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ई आर एम एस स्क्वायर is just kept as it is, which is going to be equal to 1 upon t, where t is going to be the total time taken by from this whole cycle to complete, that is 4 here। तो ये बन गया 4। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर दो इक्वेशंस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो 0 से 2 तक कैरी आउट होगा। ओके, और दूसरा वाला जो है वो सिंपली 2 से 4 तक कैरी आउट किया जाएगा। करेक्ट है? यस, सो ओके, लेकिन अभी इसमें यहाँ पे ई डी टी ई स्क्वायर डी टी को हमको इंटीग्रेट करना होगा, और प्लस यहाँ पे फिर से ई स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करना होगा। बट ई के जो वैल्यूज है या ई का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे इस इंटरवल में अलग होगा और इस इंटरवल में अलग होगा जरूर। अभी वो इक्वेशंस फाइंड करने पड़ेंगे हमको पहले, और उसके बाद उनको यहाँ पे पुट करना होगा, और फिर हमको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 पॉइंट दिख रहा है। तो अगर हम ये लाइन का इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस या y इक्वल टू एम एक्स से ही अगर निकाल लेते हैं, तो इन द रीजन इन द इंटरवल 0 to 2 हियर, फर्स्ट इंटरवल 0 to 2 जो है उसके अंदर e का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा एक्चुअली, सिंपली स्लोप, मतलब एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, जिसमें y के बदले हम डाल देंगे e जो हमको चाहिए, EMF जो कि y एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ कैन बी फाउंड आउट हियर। इट इज सिंपली 2/2। करेक्ट है? 2/2 मतलब y upon x is going to be the slope, so therefore we can just get the slope to be 1 actually into x एक्सिस पे जो हमने प्लॉट किया हुआ है टाइम, तो इसलिए वहां पे हम वो डाल देंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इन द फर्स्ट इंटरवल द इक्वेशन ऑफ e is simply t, no doubt। तो equation of e is going to be equal to t only। yes, but what about the second interval? if you just talk about the interval 2 to 4, मतलब 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स तक का जो इंटरवल है वहां पे स्लोप कितना है, तो हम देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं, देखो 2, -2, राइट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो ठीक से, तो वो है 4, 0, because it is going to be on x axis। so if we just try to find out the slope, then slope of this second interval will be actually y2 minus y1 upon x2 minus x1, where y2 is going to be 0 minus -2, this -2 मतलब वो 0 plus 2 हो गया, राइट। और x2 minus x1 मतलब वो 4 minus 2, जो कि एक्चुअली 2 ही बन गया, तो इसलिए 2/2 मतलब फिर से 1 आ गया, तो स्लोप इज गोइंग टू बी 1 अगेन। बट इन दिस केस द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, सो देयरफॉर द 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं लाइन के लिए, जो कि एक्चुअली होता है y minus y1 upon
x माइनस x1 और पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे y माइनस y1 कोई भी एक पॉइंट चूज करो सो दैट वी कैन कॉल इट एज x1 y1। ये चलो ये पॉइंट है हमारा x1 y1, तो इसलिए यहाँ पे y माइनस y1 के बदले आएगा y माइनस 0 विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी m के बदले आएगा 1 जो कि स्लोप है इस ग्राफ का, और यहाँ पे आएगा x माइनस x1 के बदले आएगा 4। ओके, तो यहाँ पे आ गया 4 हमारा। बट एज वी ऑलरेडी नो दैट y इज नथिंग बट द EMF, y एक्सिस पे हमने EMF डाला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा EMF e माइनस 0 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 4, बट x is nothing but time, so therefore it will be t minus 4 actually. So therefore that means we are going to get that E is equal to t minus 4. This is the equation of EMF in the second interval here, and this is the equation of EMF in the first interval here. Now if you just try to find out the RMS EMF, तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो E RMS स्क्वायर एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर dt, लेकिन यहाँ पे जो E हमको यूज करना है वो ये वाला यूज करना है, और यहाँ पे जो यूज करना है वो ये वाला करना है। ठीक है, क्योंकि इंटरवल अलग अलग है। यस, तो इसलिए यहाँ पे सॉरी yes, so integration from 0 to 2 of e square dt, where e is going to be t only, so therefore it will be t square dt simply, and plus in the second interval from 2 to 4 it will be integrated e square dt again, but e is nothing but t minus 4, so it will be t minus 4 ka whole square dt as it is, and then we can be able to get this E RMS square, which is actually going to be equal to 1/4 into bracket t square का इंटीग्रेशन क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी, इट इज t cube by 3 and that is from 0 to 2, no doubt, plus here it is t minus 4 the whole square का इंटीग्रेशन बनता है t minus 4 का whole cube upon 3, करेक्ट है। so this is the integration of this t minus 4 square, yes, and that is also from 2 to 4, no doubt। चलो ठीक है, so in the next step here we can just see yes E RMS square will actually be 1/4 into here it is, अगर यहाँ पे 2 का वैल्यू डाल देंगे तो 2 का क्यूब बन जाएगा 8, that is divided by 3, so 8/3 minus 0 will be the first term here, and here it will be t minus 4 का whole cube, but t के बदले अगर 4 डाल देंगे तो 4 minus 4 becomes 0, so it will be 0 in the first term minus 2 अगर डाल देंगे यहाँ पे तो 2 minus 4 becomes -2, and -2 का क्यूब जो बनता है -8, तो -8/3 आएगा यहाँ पे, but since the already minus sign is there outside, therefore that minus sign will just get cancelled with this -8/3 here, leaving behind +8/3. That means finally we are going to get this 8/3 plus 8/3, which actually happens to be 16/3, right? So here it will be 1/4 into 16/3, okay, which will actually be 4/3 here, and since this E RMS square is going to be 4/3, E RMS will actually be square root of that, so E RMS will actually become equal to 2/√3, and if we just multiply divide by √3 so as to rationalize it, so we get this as E RMS equal to यहाँ पे तो 3 आ जाएगा as it is, और 2 into 1.732 will be put as a value of √3 here, and if we just multiply it by 2 then it actually comes out to be E RMS equal to, it will be 3.464, that is divided by 3, which actually comes out to be 1.14, 1.14
1.154. It's okay. 1.15 will be actually the correct option, which is already there. Okay. Yes, this is the last question. It's okay. We can just see it in the next lecture. Let us stop here. Okay. Chalo, thank you all of you. Bye bye.